So, hello and welcome everyone. Let's get started with our very first session. In today's session, we are going to have our introduction towards financial accounting and get started with it right away. Okay. So, how many of you are actually new to accounting, doing accounting for the very first time? Anyone? One? No. Okay. Anyone else who's new to accounting? Completely new to accounting? There is some students who come from the science background, so no problem for that. We will be training you on that as well. So let's get going with it. So we will be having this type of content which is there available from the ACCA. There are 18 chapters. Today is 1st of September and we will be done with our sessions by 15th of October. 15th of October is the final day through on which our sessions will be done. So be ready. Be sure that if you miss out on anything, watch that recording and be in line with it so that in November you guys can give your examination. Okay. So let's get started with it. Now, this is our first chapter. I hope that my voice is clear to everyone who's there in the session. If yes, then you can say a yes. Or else I'll change my mic. Yes, sir. Clear? Okay. Who all are there in the session? That's the problem. Okay. So let's get going. Why do we need financial reporting or why do we need financial accounting? Why do we need it? Why does any business need financial accounting? To maintain records? What else? Maintain records about what? Financial transactions of the business. Okay, what else? Anyone can answer. Who's there online also can answer. Why do we maintain account? To understand the budget and the uh, sales that the profit and loss that a business is dealing with. Okay, that's a really good answer about profit and loss. To know about profits and loss about a business, that's the reason we are doing it. Great. Now, just profit and loss, just think about it. Suppose I am buying something for 100 and I'm going to sell it for 80. My profit is 20. Simple mathematics, right? मैं खरीदा 100-200 रुपए में, बेच रहा हूं जो सो उसको थोड़ा सा आगे मार्जिन बढ़ा के, या फिर मैं बेच रहा हूं 100 रुपए में लेकिन मैं उसको खरीदा 80 रुपए में. So what's happening? That's my profit. That's it. Our work is done. Yes or no? अकाउंटिंग का मतलब तो उतना ही हुआ ना, प्रॉफिट मालूम करना है अपने को. लेकिन यहाँ पर there are many things which we need to keep into consideration. Now what are there? There are a lot of non-cash transactions. What are there? Non-cash transactions जो हो जाते, अपने को क्या करना रहता, उसको भी अकाउंट करने का रहता. अब वो कैसा करेंगे? एक्चुअली अकाउंटिंग का बेस ही वो है, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना. थिंक अबाउट इट, राइट इट डाउन एज वेल. आप लोगों को बोला था ना बुक पेन लेके आना है बोल के, कैलकुलेटर मिला है ना, आप दिखाओ. Everybody has a calculator who are there online, then it's really good of you guys. ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि मेन बेस अकाउंटिंग हम करते ही क्यों हैं. करते इसलिए हैं क्योंकि अकाउंटिंग में होता है अक्रूवल सिस्टम. अगर अक्रूवल सिस्टम नहीं है, ओके, अगर अकाउंटिंग से अक्रूवल सिस्टम हटा दिए तो सिर्फ और सिर्फ कैश मैनेजमेंट हो जाता. फिर कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट्स इट.
ये जो इन्वेस्टमेंट्स, वैल्यूएशंस, ये सब जो है वो कुछ रहते ही नहीं अगर अक्रूवल को हटा दिया तो। अक्रूवल का मतलब यहां पे है एस्टिमेशंस। सर एस्टिमेशन, एग्जैक्ट एस्टिमेशन का मीनिंग अक्रूवल है क्या? नहीं। एस्टिमेशन का मतलब यहां पर यह है कि सपोज आज हम 1 लाख रुपए की चीज बेच रहे हैं, ठीक है, टुडे वी आर सेलिंग दिस, बट आर वी रिसीविंग कैश इज अ क्वेश्चन। We are not receiving cash. We will be receiving cash after 1 month. Now we are going to receive cash after 1 month, but we are going to sell today. Is it a good business first of all? पैसे मिल रहे हैं तो सही ना अपने को, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड कैसा करेंगे? ये तो पैसे अपने को 1 महीने के बाद मिल रहे हैं, आज क्यों रिकॉर्ड करना? क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, कॉलिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस वक्त के खर्चे हैं उसी वक्त की इनकम के साथ मैच होना। फॉर एग्जाम्पल ये अगर दिसंबर में हो रहा है तो मुझे दिसंबर में ही रिकॉर्ड करना है इसके एक्सपेंसेस और इनकम दोनों मिलाकर, तो जाके मैचिंग कॉन्सेप्ट सही होता, तो जाके जिस वक्त का खर्चा है उसी वक्त की आमदनी के साथ मैच होता। नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती। यस और नो? तो ये एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। अक्रूवल भी एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। These all are the things on which accounting becomes bit confusing. अगर आप अक्रूवल समझ लिए तो आप पूरी अकाउंटिंग समझ लिए, बाद में तो खाली प्लस एंड माइनस है। अक्रूवल is like on that base there's a lot of things related to accounting. Is that clear? तो क्या होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? जो चीज होने वाली है, जैसे कैश मिलने वाला है तो हम लोग लिखते कि कैश मिलने वाला है, मिल गया नहीं लिखते, क्या लिखते? मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर हम किसी को पे करने वाले हैं तो वी पुट इट अकाउंट्स पेएबल। वी डोंट स्टार्ट विद अरे हम पे कर दिए या फिर पे करेंगे, दीज थिंग्स आर नॉट देयर। अक्रूवल, रिसीवेबल, पेएबल, यू नीड टू रिकॉर्ड इट। क्लियर? अब आ जाएंगे हम लोग वापस थोड़े से डेफिनेशंस में जो हमेशा कंफ्यूजिंग रहते हैं। टाइप्स ऑफ एंटिटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या करता? नेचर, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल पोजीशन इज नथिंग बट बैलेंस शीट। प्रॉफिट और लॉस इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Statement of cash flows is a different statement again. Statement of changes in equity is again a statement which is coming under the scope of financial statements. ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और यूजर्स कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? स्टेक होल्डर्स मतलब people who are interested in the organization are stakeholders. Clear? समझ में आया ये? Everybody will be having a portal like this. अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया, yes करके नेक्स्ट करना है आप लोग को। तो हर एक के पास ऐसा पोर्टल होगा। So you guys should be updating it then and there regularly. अब टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस कितने हैं? Business can operate as a sole trader, partnership, or a limited liability company. Sole trader is a person who is single-handedly running the company. Partnership is a 2 or more people. Limited liability company is कि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं रहती. Company is a separate legal entity. Okay. Now, sole traders क्या करते हो लोग? They are only the owners of the company. I want you guys to write this down. लिखते जाओ, मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ. Key features of sole traders: change in business owner. To change the owner of a sole trader, the existing sole trader will sell their business to the new owner. मतलब उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा पूरा बिजनेस. बिजनेस कंटिन्यूएशन, सोल ट्रेडर के बेस पे ही बिजनेस चलता है सब कुछ. कंटिन्यूएशन करना है तो भी उसी के बेस पे चलता. टैक्सेशन, पर्सनली उसके ऊपर ही टैक्स होता, बिजनेस और उसका दोनों का मिलाकर ही कर लेते. सोल ट्रेडर का याद रख लो, दोनों को साथ में करते, अलग अलग नहीं करते टैक्सेशन मैटर्स के लिए.
Then ownership of business property. There is no separation of ownership between sole trader and its owner. सब एक में ही आ जाता. Legal action. The sole trader is legally liable for any penalties and fines incurred if a legal dispute occurs and a court judgment is made against the business. Completely कौन liable है? The business owner itself is liable. Advantages क्या है सोल ट्रेडर के? कंट्रोल, सेटअप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी सब अपने हाथ में ही रहता, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? आप उसको जल्दी स्केल नहीं कर सकते, बिजनेस को लंबा चला नहीं सकते. Even raising finance is a big problem because of that. And the liability, you're completely liable in the business. Personally also liable in that business. Now, I want you guys to answer this. Which one of the following is most likely to be interested in sole traders' financial statements? Most interested in sole traders' financial statements? Tax authorities. Okay. अपने अपने आंसर लिख लो आप लोग. अगर किसी का कोई दूसरा आंसर है तो भी फाइन. तलहा तुम रॉन्ग नहीं जा सकते, याद रख लो. Which of the following statements about sole traders are true? पहला वाला क्या है? Shareholders, I guess. First one, shareholders. Second one, see, I'm not saying that that's the answer. Option C, second one. ठीक है, let's see the answer now. तो पहला वाला क्या है बोले थे आप लोग? Option B, पहला वाला option D. Tax authorities. जी. Second one. Option B. Number one is tax authorities. They'll have to pay tax and tax authorities are highly interested. बाकी कोई लोग रहते ही नहीं interested उसमें. आप क्या लिखे थे तलहा? Tax authorities. Okay. Then second one is 1 and 3. क्योंकि यहाँ पे ये second line does not make sense at all. Because sole trader can obtain bank OD. क्रेडिट कार्ड मिल सकता है ना उसको. बैंक ओवरड्राफ्ट तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड ओनली. लेट्स गो अहेड. पार्टनरशिप्स में क्या है? 2 or more people come together to do business. चेंज ऑफ ओनरशिप हो सकती, लेकिन ऑल पार्टनर्स मस्ट एग्री. बिजनेस कंटिन्यूएशन होता है अगर पार्टनर छोड़ के गए तो भी, लेकिन यहाँ पर भी until unless it is LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जब तक नहीं है वो, एवरीबडी इज पर्सनली लायबल एज वेल. ठीक है. टैक्स ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, द पार्टनरशिप इटसेल्फ इज नॉट लायबल फॉर टैक्स, क्योंकि आप इंडिविजुअल पे ही टैक्स होता है, यहाँ पे कलेक्टिवली होता. until unless it is defined that it is a LLP, limited liability partnership, तभी होता हो. Then ownership of business property, there is no separation of ownership between partnership business and its owners. वो लोग completely liable होते हैं. Advantages क्या है? थोड़ा सा एक 4-5 लोग ज्यादा रहेंगे इसमें, स्ट्रक्चर रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, पैसे आप रेस कर पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करेंगे आप. You'll have proper skills and knowledge because there are 2 or more people. Risk, having more partners or partnership will spread the business risk to more people. The impact of poor performance and losses will be reduced for each partner because there are more partners working in it. Disadvantages, खर्चा ज्यादा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम ज्यादा लगता है, हर एक से पूछ के बोलना. Profit sharing, if you are sharing a lot and those people are not doing the work, then also you have to share it.
Business continuity can be a problem if there are clashes between the partners. Each partner's personal assets are at risk. Disagreements and disputes, several severe disagreements or disputes not resolved promptly between partners can result in hung decisions, or in the worst case scenario, the partnership ending as well. Disadvantages of partnership. I want you guys to write it down as well. I just want you to write down the side headings. आपको as it is लिखने की जरूरत नहीं है. This is your running notes. Done? Done? Then comes limited liability companies. Now, those are the companies where the person is separate and the company is also separate. The taxation of these two are going to happen separately. The filing is going to happen separately. उनका अलग से पैन कार्ड रहता. पैन कार्ड तो पर्सन का ही होता ना. यहाँ पे क्या हो जा रहा, बिजनेस ही एक सेपरेट पर्सन बन जा रहा. तो अगर हम बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहे या बिजनेस से हमको कुछ आमदनी हो रही, दैट इज अगेन अ ट्रांजैक्शन and it's a separate entity transaction. Okay, is considered to be legal person of its own, separate from its owners, hold shares in a company. Change of in business ownership can happen very fast because everything is up to dated. Business continuation goes on fast, even if the owner is dying or something like that, the business goes on, continues. Taxation, they do it on a separate basis. Ownership of business property, the business owns those properties, and if it's owned by someone else, then that's someone else. There is no unlimited liability. नहीं है. आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी है, बिजनेस की गाड़ी अलग होती. Legal action, you can only take legal action until the amount which is invested based on by the owner. You cannot be personally liable for that. Legal repercussions of a limited liability company are limited to business only. The owner's legal liability is limited to the value of shares they own. It is the company that is legally liable, not its shareholders. Okay. Then advantage of limited liability, liability नहीं रहती आपके ऊपर. जितनी आपका whatever you are liable for, then only you are liable for that. You are not unlimitedly liable. जैसे कि पार्टनरशिप और sole proprietorship में होता. Raising finance, you can raise finance from IPOs. You can get funds from anywhere. Okay. Moving forward, a limited liability company can be transferred from one to another very easily. Disadvantages of limited liability company is the cost. Setting up cost बहुत ज्यादा रहता. टैक्स आपको अलग अलग देना पड़ता. बिजनेस का भी टैक्स देना पड़ता है, आपका खुद का टैक्स भी पे करना पड़ता है आपको.
फिर पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी रहती, क्योंकि आप पब्लिक के पैसे के साथ काम कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे के साथ काम कर रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना. ओके, सो कैन यू गाइस जस्ट आंसर दिस फास्ट? यू गाइस हैव 30 seconds. Done? फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है. सेकंड? So in this, you have to identify an appropriate business entity, which it can be. Done? Or need more time? Done? ये तो हो गया. So let's do it one by one. First one, business will continue if one of its shareholders die. क्या है वो? Limited liability company. Okay. Then the next one is again limited liability company, because there's a separation between ownership and owner. Then again it is limited liability company. But what's the fourth one now? उसकी savings ही main source of investment है. What is that? Sole trader. Sole trader. Okay. Now the next one is a suggestion, appropriate business model, appropriate business entity. So first one is a small coffee shop which he wants to open. It would be a sole trader. Next one, partnership. Again, it's sole trader. Minimum 2 shareholders wishes to have 100% of his business. This is only possible through a sole trader. Next one, operate by as a builder, but it's considered that he will be personally liable for legal claims or by his customers. So better रहेगा क्या?
कंपनी बना लो. And then Lee has been running accounting by herself and concerned to get more expertise person in this. That is partnership. Is it clear, everyone? Any question, any doubt? Financial reporting लिखो आप लोग, पूरे लिखो, मेरे साथ लिखो. Recording लिखो. So recording, analyzing, summarizing, analysis of financial statements. देखो क्या क्या है. Recording, analyzing, summarizing, then analysis of financial statements. ये सब हो जाता है इसके अंदर. तो रिकॉर्ड करना मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो कि पैसे आने वाले हैं, पैसे जाने वाले हैं या पैसे आ गए, इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड. देन वट एवर इज रिकॉर्डेड शुड बी प्रॉपरली एनालाइज्ड कि भाई ये पैसे कहाँ से आए और क्यों आए, ये आप पैसे किसको पे करें और क्यों पे करें. You should analyze that, and then at the end of the day you should summarize. Okay, this is what came in, this is what went out. Simple. Record, analyze, summarize. Say that with me. Record, analyze, summarize. Record, analyze, and summarize. So analysis of financial statements, then you compare it with the previous year, that whether you have done right or not. Then you compare it with a competitor organization and see whether you're doing well or not. So analysis goes on. Let's continue. Nature and principle of financial statements. Number one is balance sheet. Statement of financial position is called balance sheet. Balance sheet का काम क्या रहता? Record all the assets and liabilities. All the balances of assets and liabilities and owner's equity as well. So what all comes under here? Under these, the assets would be land and buildings, goods not sold to customers, cash in hand, money owed by customers, money owed to suppliers is a payable thing, it's a liability. Tax owed to tax authorities is a liability. First of all, I hope you guys know what's a liability. Liability का मतलब मालूम है क्या है liability का मतलब? Liability का मतलब लोन है सर, लोन जो चीज अपने को देने की रहती है चीजें चलेगी. ठीक है. बोलो मोहित क्या है? आप बताइए, आपका नाम बताओ. लायबिलिटी अपनी जिम्मेदारी. वी नीड टू पे ऑफ. आप लायबल है इसके, आप जिम्मेदार है इसके. टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है. तो यू हैव लायबिलिटी फॉर इट. क्रेडिट. लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट नहीं होता, याद रख लो, समझने के तौर. लेकिन आपकी जिम्मेदारी है. तो आपके पास क्या क्या है? बैलेंसेस इज योर एसेट्स, कि भाई ये मेरे वो आइटम्स है बिजनेस में जो मैं यूज करने वाला हूं फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस. तो ये मेरा लॉन्ग टर्म एसेट हो गया. और वही उसके अंदर थोड़े से शॉर्ट टर्म एसेट रहते हैं. अब जैसे कि ये एक इंटरैक्टिव पैनल है, ठीक है, ये मैं खरीद के मैं बेचना चाह रहा हूं क्या? ये नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज यूज दिस इन द बिजनेस. सो दिस बिकम्स अ लॉन्ग टर्म एसेट ऑफ द बिजनेस. अब इसके पैसे अभी भी बाकी है, तो व्हाट आई एम लायबल टू पे. तो मेरा ये एसेट भी है, मेरी लायबिलिटी भी है. नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ लायबिलिटी? जिसको पैसे पे करना है आपको, विच यू हैव टू गो आउट. तो होता क्या है यहां पर, जो कंपनीज है, कंपनीज, we invest in the company because companies is our own company, right? We are investing in the company. Now when we are investing in the company, where should our investment be shown? In the assets or liability? कहां दिखना चाहिए?
एसेट्स में दिखना चाहिए। एसेट हम पैसा लगा रहे हैं ना बिजनेस में, कहाँ एसेट दिखना एसेट। चाहिए? कौन आंसर कौन दे रही है? भाई दे रहा सर वो खाजा है वो। हाँ सर। तुम रास्ते में है बोले थे ना। रास्ते में रुक के सुन रहा था सर, बहुत ट्रैफिक है, हड्रिक में ट्रैफिक, इसलिए साइड में ले लेके सुन रहा हूँ। सबको मालूम है ट्रैफिक है, और ये टाइम पे गणेश के फेस्टिवल की वजह से तो हर जगह ट्रैफिक है। हमारे पास भी सेलिब्रेशन हो रहा बाजू, तो जल्दी निकलना पड़ता है घर से। खैर, हाँ सर वही देखिए। समझने की बात यह है कि सपोज हम जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो अपने पैसे हुए ना, राशिद सही बोल रहे हो ना मैं? लेकिन जब एक कंपनी रहती, कंपनी क्या हो गई? डिफरेंट पर्सन हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई वो। तो वो लोग क्या करते कि हम जो पैसे कंपनी में डाल रहे, वो लोग एज अ लायबिलिटी लेते उसको, कि भाई ये मेरे पैसे नहीं है, मैं कंपनी हूं, मेरे नहीं, मेरे ओनर के पैसे है ये, तो मैं एज अ कंपनी लायबल हूं कि ओनर को वापस पैसे दूं ये। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए क्या होता, कंपनी के अंदर आप पैसे डाल रहे हैं तो भी वो लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। और अगर आप कोई एसेट ले लिए, सपोज कार ले लिए, घर ले लिए, बंगला ले लिए, पर्सनल यूज के लिए तो इसमें नहीं आता। ऑफिस यूज के लिए लिए तो इट विल कम अंडर दी एसेट साइड। ओके, इज दैट क्लियर? दैट विल कम अंडर दी एसेट साइड। ऑल क्लियर टिल हियर? ये क्या हो गया? ये भी एक ऐसे, लैंड एंड बिल्डिंग, द बिजनेस कंट्रोल्स, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल नीडेड फॉर ऑपरेशन, गुड्स नॉट येट सोल्ड टू कस्टमर्स। मतलब मेरा स्टॉक भाई, सपोज मैं जैसे मोबाइल फोन बेच रहा हूं, मोबाइल फोन खरीद के लाया मैं, अब बेचने वाला हूं, लोग खरीदे नहीं, स्टॉक में रखा हुआ है, तो मेरा स्टॉक ही हुआ ना वो। तो दैट इज ऑल्सो माई एसेट ओनली, बट शॉर्ट टर्म, क्या भी बिक जाएगा वो। आई हैव परचेज्ड इट विद द इंटेंशन टू सेल, दैट कम्स अंडर माई इन्वेंट्री। अगर सपोज आई हैव परचेज्ड इट विद द इंटेंशन टू यूज, दैट्स अ लॉन्ग टर्म एसेट। ठीक है? देन कैश इन हैंड, पैसा मेरे हाथ का, बिजनेस के हाथ का इशू आना, एसेट है। मनी ओड बाय कस्टमर्स, रिसीवेबल, मेरे को जो सो पैसे आने के हैं मार्केट से, तो वो भी तो मेरे पैसे हुए ना। क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम उसको? अक्रूवल के वजह से। क्यों रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट फर्स्ट लाइन पढ़े अपन वो, अक्रूवल याद है ना? नहीं भूल गए? अक्रूवल का मतलब ये होता, अक्रूवल कंपेयर होता हमेशा कैश बेसिस से। कैश बेसिस क्या बोलता कि जब कभी भी पैसे आए तब भी रिकॉर्ड करो, जब तक मत रिकॉर्ड करो। डोंट रिकॉर्ड इट until unless it is received. Who says that? Cash basis. What does accrual say? If the transaction is yet to happen, but the deal has been done, the goods have been transferred, what we should do? We should record it, but not record it as we received it. Record it as we are going to receive it. Going to receive it. तो पैसे आने के हैं बोल के तो रिकॉर्ड करो। फिर अक्रूवल जब ये बोल रहा है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है? अक्रूवल ये भी बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 10% अपने को नहीं आए। अगर हमने 1 लाख रुपए की चीज बेचे तो शायद 10,000 का नुकसान हो सकता है हमारा। ये भी एक एस्टिमेशन है। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? अक्रूवल के बेसिस पे। तो जो 10% अपने को नहीं आने का है, उसको एज एक्सपेंस डाल दो, अलाउंस बनाओ उसका। ये सब एडवांस लेवल में जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। है तो वो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर्स में आ जाता है आप लोग को ये, लेकिन वो मेन है वो। अगर वो क्लियर रहा आपका, अक्रूवल्स क्लियर रहा आपका, देन कंप्लीट अकाउंटिंग विल बी इजी। कंप्लीट अकाउंटिंग विल बी इजी, क्योंकि 50% अकाउंटिंग तो एस्टिमेशन पे चलता, 50% एक्चुअल्स रहते। इज दैट क्लियर एवरीवन हु इज देयर ऑनलाइन एज वेल? Yes, अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? कितना, किसका कितना प्रॉफिट हुआ ये डिसाइड करें। प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ कैसा डिसाइड करेंगे हम लोग?
अपने रेगुलर इनकम्स देखेंगे एंड देन रेगुलर एक्सपेंसेस देखेंगे and then we will tally it off and see how much are we in profit or loss. In that, how do we break that down? We will do it once we come there. Until then, make a note of this. Done? Done making note of this? अब ये जो कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज क्या होते हैं? इज टॉकिंग अबाउट अक्रूवल जो है ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट उसको निकाल दे रहा है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो नॉन कैश इनकम, नॉन कैश एक्सपेंडिचर ये सब देख रहा है ना, उसको हटाओ भाई, उसको थोड़ा सा बाजू कर दो और खाली कैश फ्लो बनाओ। दैट इज व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, ओनली कैश ट्रांजैक्शन पे बात करेंगे। तो ये हम लोग पब्लिकली भी पब्लिश करते ही है कि भाई, क्योंकि अक्रूवल के बेस पे तो पैसे आने वाले हैं बोल के करोड़ों में डाल देते थे। आए नहीं आए किसको मालूम? उसी को तो बोलते ना कुकिंग ऑफ बुक्स। आए गए दिन अपन देखते फ्रॉड्स अकाउंटिंग में कितने होते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चैलेंजिंग है, क्यों सही नहीं है वो बताते, उसमें अक्रूवल है बोल के बोलते। तो ठीक है, अक्रूवल है बोल के वो चैलेंजिंग है ना, तो उसके बाजू कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाओ, so that we have the real picture of how much cash is there in hand. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि प्रॉफिट्स करोड़ों में रहता, कैश का बैलेंस जो सो लाखों में है। ऐसा क्यों? प्रॉफिट अलग होता, कैश अलग है। ठीक है, उसके लिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता। अब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 टाइप के एक्टिविटीज रहते हैं, उसको सेग्रीगेट करते कि कैश अपन इन्वेस्टिंग के लिए रखे, या कैश अपन नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के लिए रखे, या कैश अगर अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। सो देयर इज ऑल दोस थिंग्स। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ आता हो चैप्टर्स। ये देखो, चैप्टर्स के नाम में ही समझ में आ जाता।
जैसे ये रिसीवेबल पेएबल है बेस्ड ऑन अक्रूवल, यहाँ तक डबल एंट्री सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइन, यहाँ से मेन शुरू हो रहा रिसीवेबल पेएबल, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, मे बी और मे बी नॉट, कंटिंजेंट का मतलब मे बी और मे बी नॉट होता, ठीक है। उसके बाद देखो अक्रूवल्स का अलग चैप्टर आ गया, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट, डिफर्ड इनकम। देन यू सी ये प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट, इट्स अ सेपरेट चैप्टर, देन कंसोलिडेशन, देन इंटरप्रिटेशन। आपका जो मेन एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन यू नो हाउ मेनी मार्क्स इट इज, 100 marks. How is the breakage of this 100 marks? It is for 2 hours. Okay, for 2 hours. What is the breakage of this? 35 2-mark questions would be there, which equals 70. What's the balance? 30. 15 मार्क के 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और वो 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इधर से ही आएंगे, ये लास्ट के चैप्टर्स में से। अगर आप अकाउंटिंग को और अच्छे से दिखना और समझना चाह रहे हैं तो ये देख लो आप लोग कि फ्रॉम चैप्टर 1 वी हैव बीन एक्सप्लेन्ड अबाउट व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, यही बात कर रहे हैं, और लास्ट में आके वही बना रहे हैं हम लोग। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग एवरीथिंग इन बिट्स एंड पीसेस। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक we are doing everything in bits and pieces. Then what we are doing is all these bits we are putting together from chapter 14 to chapter 18. Are you guys there with me? क्लैरिटी मिल रही है नहीं यहाँ पे? तो यहां पर आप समझो कितना इंटरलिंक्ड है ये पूरे स्टार्टिंग के चैप्टर्स। आपको क्वेश्चन सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आ सकता 15 मार्क का, या फिर कहीं से भी आ सकता है। इट्स लाइक यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। उतना ज्यादा सिलेबस भी नहीं है ये, अगर आप अच्छे से पढ़े, जैसा बताया गया करे, यू कैन कंप्लीट इट वेरी फास्ट। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास ही बोल दिया मैं, कब खत्म हो रहे क्लासेस अपने? 15th of October से पहले पहले ही फिनिश हो जाएंगे। तो अक्टूबर तक आपको एग्जाम लिख लेना है, आपको तो सितंबर में लिख लेना है, ठीक है? एवरीवन clear on this, that how it's going to happen? Let's get continuing with it. Okay, so these all are the things talking about it. Let me just start with financial position. Financial position is basically your balance sheet. Balance sheet is a place where what all you have. Can you guys make a note of this? Assets, liabilities, owner's equity. Write it down. लिखो ये। Done? Now, I want you guys to make this. Abu is a sole trader who operates Glara, a business that manufactures goods and sells them to tourists. Glara has a workshop and a small shop. Glara's statement of financial position is shown below. Please write it, make it right down. ऐसे ही बनाओ जैसा टेबल में है वैसे ही। आई वांट इट इन योर बुक। Glara statement of financial position.
Done. The more clarity you have in these starting days, the better it would be for you to complete this fast and to have clarity over this. After that, go on further. I have just scrolled down. There is, after total assets, you have capital. Capital starts differently. Are you guys done till here? Done further? I have scrolled it further. Done? अब देखो what all it is. अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया अभी. An asset which is kept for long term use in the business, that is a non-current asset, basically a long term asset used in the business for more than 12 months, basically एक साल से ज्यादा, is a non-current asset or a long term asset. Whereas कोई भी चीज जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो रही है, that is a current asset. Okay, now current assets can be converted into cash or consumed by business within the next 12 months. Inventories are goods that Dera will use for manufacturing or will sell it in the future. These all are the things which will come under as a current asset. Then capital is the amount invested by the owner or shareholders. Okay. Non-current liabilities is a long-term loan which you've taken for the business, whereas current liabilities is short-term liabilities of the business. Okay. So this will be further covered in chapter 15. Anyhow, state whether the following statements are true or false. Answer. प्रीपेमेंट. प्रीपेमेंट का मतलब एडवांस में पे कर दिए.
एडवांस में पे करना इज अ लायबिलिटी, एडवांस में पैसे आ जाना इज अ लायबिलिटी। जी सर। एडवांस में पैसे आ जाना इज अ लायबिलिटी, एडवांस में पैसे पे करना इज अ एसेट। ओके, नेक्स्ट, company's bank account balance is always a current asset। current asset का मतलब which can be converted into cash within 1 year। वो कैश ही तो है वो, तो क्या हुआ? नेक्स्ट, a current liability is due to be settled within the next 6 months of the reporting date। थोड़ा सा ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, नहीं तो मैं दीवार पे जो चित्रकार बनाता है बोलने वाला था। Drawings are added to the capital in the sole trader's financial statements, reduced, right? False, always is not। If the balance, it should be reported as a current liability। अगर पैसे नहीं है, माइनस में है, तो it will be a current liability। Then settle in next 6 months, reporting date नहीं, in a calendar year भी नहीं, in a financial year within 6 months, yes। आज से अगर 6 महीने अगर का हम लूं और जो है सो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जा रहा वो, तो फिर वो करंट नहीं रहा। जैसे कि देखो भाई, सितंबर का महीना है, 6 महीने में मैं आपको पैसे दूंगा बता रहा हूं, तो 6 महीने का एंड होते जाके वो अगले साल में ना, तो अगले साल का हिसाब तो अलग हो गया। ये साल का हिसाब यही साल के अंदर अगर वो हो रहा, देन इट इज करंट। अगले साल में चले जा रहा वो तो नॉन करंट में हो गया। Anyhow, within 12 months also gives us right statement there। drawing was subtracted from capital, not added। अब आता प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सिंगल स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टू स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का अलग। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज द इनडायरेक्ट इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इज indirect incomes and expenses, whereas regular profit and loss is direct income and expenses। make a note of it। So now just make a note of it। profit and loss is a primary finance summarizing an entity's financial performance in terms of profit or loss in a year। तो इसको और अच्छे से हम क्या बोलते हैं? समरी ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ग्रॉस प्रॉफिट। It shows the profit or loss for the period after taking account of all items of expenditure। Then other comprehensive income consists of items of income which are not recognized in the statement of profit and loss, while various of incomes and expenditure are treated as other comprehensive। The only item you're likely to encounter is a surplus arising on a revaluation of property in this particular syllabus which you have, because this is basics of basic नहीं, financial accounting है ये। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बहुत ज्यादा एडवांस ट्रांजैक्शंस आएंगे, यहाँ पर ये बेसिक्स ही रहेंगे।
This is not recognized in profit or loss because it is not realized as cash. Okay. As mentioned above, other comprehensive must be presented by companies. However, sole traders partnership may choose to include this information or not. It's up to them. आप तो पढ़े होंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पढ़े. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं है वो सिलेबस में आपके, ये यहाँ पे अलग है. ओके, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. Sales returns, cost of goods sold, opening inventory, purchases, less purchase returns. Make a note of it fast. Done. I have scrolled it down further. Make a note of it. If it is done till here also, I'll scroll further. Cost of goods sold हो गया? मोहित हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? याद रख लो कि यही फॉर्मेट रहता. ये फॉर्मेट अगर दिमाग में बैठा हुआ रहा तो कोई भी प्रॉब्लम आया इजीली सॉल्व कर ले सकते. तुम्हारा वो तो पहले आना चाहिए था, तुम तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है. स्टार्टिंग में बेसिक्स पढ़ाए जाते. अब रिकॉर्डिंग देख लेना तुम आज. अभी ये क्लास खत्म हो जाती है ना, रिकॉर्डिंग होती, अभी देख लो तुम. घर को गए जब तक भी, ताकि घर पे जाने के बाद मम्मी के सामने रोना नहीं तुम कि मैं क्लास ऐसा हो गई.
Write down all these expenses as well. फिर जब इसके बाद जब प्रॉफिट आता, उसके बाद आता अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, देख लो। ये प्रॉफिट आने के बाद लास्ट में है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और बहुत कुछ आता, लेकिन आप लोग के सिलेबस के मुताबिक गेन्स ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन इज मोर देन इनफ, बिकॉज you are not getting into that advanced level of financial reporting. Okay, do I need to explain what all these are? राशिद, मालूम है ये सब क्या है? पढ़ लिया तो मालूम है, आता है क्या उसमें, देख लो। सेल करे, सेल का रिटर्न है। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली अपना स्टॉक जो अपन बेच रहे लोगों को, दैट इज आवर स्टॉक। देन परचेजेस जो हम खरीद रहे। अब ये देखो यहाँ पे परचेजेस में इवन नॉन कैश परचेजेस आल्सो कम्स हियर। क्यों? अक्रूवल की वजह से। ठीक है, देन वी हैव परचेज रिटर्न्स इफ एनी, same goes minus closing inventory, we get our cost of goods sold total. Then we have gross profit, after that expenses. Expenses कौन से expenses है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंटल, रिपेयर्स, सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब ऐसे कुछ भी चाय पानी ऐसे खर्चे, डिस्काउंट्स अलाउड, ऐसे ही खर्चे ऊपर का। देन डिस्काउंट्स अलाउड, जो डिस्काउंट्स हम देते हैं वो कॉस्ट छुआना। देन लोन इंटरेस्ट, पैसे जो पे कर रहे हैं आप, उसके बाद कुछ पैसे बचे तो आपको मिलता प्रॉफिट। फिर उसके बाद और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपेंसेस, इनकम्स, वो भी आ जाते हैं इसमें। ओके, एज अ रिमाइंडर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस OCI is the above example for sole trader. Now I want you guys to write it down in order, 1 to 7 ऑर्डर में डालना है आपको। अभी देख लिए, लिख लिया ना आप लोग? कौन सा पहले आता? Which one comes first? हाँ, sales next. हाँ, cost of goods sold next. Profit, 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 gross profit. Then हाँ, फिर क्या आता? प्रॉफिट तो सेकंड लास्ट है, 6 हो गया ये। प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन लॉस कौन सा हो गया? 7। अदर इनकम 4th, 5th, देख लो। तुम सही बोले, मतलब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं आने, तुम वो खुद से कर ले सकते ना ये तो। अदर इनकम इज 4th।
Loan interest is fifth because it's second last thing only. Anyhow, let's go further. Statement of cash flows. Now, statement of cash flows, what do we do in statement of cash flows? Is we take care of account, is we take care of what? Cash transaction only. कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ये लोग क्लासिफाई कर देते हैं 3 एक्टिविटीज में. राइट डाउन दीज 3 एक्टिविटीज. आई वांट एवरीवन राइटिंग डाउन दीज 3 एक्टिविटीज. अब ये कैश फ्लो स्टार्ट होता. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम टैक्सेस पेड, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और रेगुलर सेल्स, परचेजेस, ऑल दिस कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली. असल में तो ये डायरेक्ट मेथड है. डायरेक्ट मेथड थोड़ा बहुत इजी होता, आता ना एग्जाम में. इनडायरेक्ट मेथड आता, वो भी पढ़ेंगे हम लोग. देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. लिख लिया ना आप लोग ये तीनों? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. उसके बाद यू हैव योर एंडिंग ऑफ कैशेस. अब ये पूरा पढ़ने के लिए we will do it once we reach cash flows. For now, it's just an understanding that why we are making cash flows. Anyhow, I'm going to help you with this. For each of the following items, state whether they belong to operating, investing, or financing activity. Purchase of building, it is an investment. Income taxes paid, it is your regular cash operations. Profit on sale of motor vehicle is again your investing activities. Dividends paid is your financing activity. Okay, non-cash operating activity में ये आता हो. Let's just go ahead now. ये हम तब करेंगे कब? When we come towards cash flows. For now, let's go ahead. The same thing, changes of cash flows. देख लो उन्हें क्या बोला. We'll cover it in chapter 13. Simple. गिन के बताता हूं आपको. स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते? जो कंपनी में इंटरेस्टेड है. तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स रहते हैं उसमें, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स रहते हैं, कनेक्टेड स्टेक होल्डर. 3 इंटरनल स्टेक होल्डर्स, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. These are the people who have interest in the business. ठीक है, जैसे कि मैं एक कस्टमर हूं. I am a customer of Samsung Mobile. So do I have interest in Samsung? Yes. So am I a stakeholder? Yes. But can I do changes in the company? No, because I don't have the power. But I have interest. दिलचस्पी है मेरे पास. Okay. Internal stakeholders कौन होते? Business owners, employees of that organization are internal stakeholders. External stakeholders, government जो टैक्स खरीद लेने आती है, या फिर जो तुम लोग काम बराबर कर रहे नहीं कर रहे, पोल्यूशन फैला रहे क्या, तो ये हो गया एक्सटर्नल. एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हो गए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन हो गए? कस्टमर्स, सप्लायर्स. कभी एक्सटर्नल कभी कनेक्टेड, कुछ भी हो सकता, डिपेंड करता. तो यूजर्स, स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं. इन सब को देखते हुए we should make sure that we are in line with everyone. इसके लिए आता है स्टेक होल्डर एनालिसिस भी. कहाँ गए स्टेक होल्डर एनालिसिस? Do we have this or not? Anyhow, I'm going to share कुछ दिन पहले ही तो सेशन I uploaded it, right? BT, FA, MA, क्या बोलते हैं, further going, corporate business laws, performance management, taxation तो शायद नहीं, financial reporting, audit assurance, financial management. हर जगह है स्टेक होल्डर्स. तो इसलिए मैं एक जनरल वीडियो बनाया था, देखे आप लोग वो?
Did you guys watch it? What is this? Yeah, you guys not watching? Let me check if it is there available here. But why is this taking so much time? तुम्हारे वजह से हो, तुम लैपटॉप पे कुछ रखे शायद. Anyhow, I'll share it in the group shortly. For now, let us move ahead. We are actually done with this chapter. Let us go on with a quiz. You guys ready for the quiz? 5 questions. How long will it take for you to answer? 2 minutes. 5 questions, 2 minutes. ठीक है ना मोहित? And your 2 minutes starts now. बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया अपन, कैश फ्लोस पढ़ लिया अपन, की बिजनेस रेशियोज पढ़े क्या? नहीं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस. सी, एवरीवन इन लाइन विद मी? नेक्स्ट. Which of the statement is false here? Business may operate as a limited liability rather than as a sole trader for tax reasons. Okay. A partnership can only be formed if a partnership agreement is drawn up. A limited liability company, limited company, not its shareholder, has legal. Sole traders often use bank overdraft as a significant source of finance. तो क्या हो गया? बी. बी क्योंकि यही जो है सो ऑड वन आउट है. Business can may operate. Let's go ahead. Naima is a sole trader who runs grocery business. Which one of the following is most likely to be interested in Naima's financial statements? Auditors, customers, bank managers, shareholders. Auditor, Naima's auditors. Okay. Anyone has a different answer? I want those people online. आप 30 सेकंड बचे हुए, बस जल्दी बोलो. Answer fast. C. Bank manager. Next, which of the following is not a component of financial statements? Cash flow forecast, क्योंकि ये forecast financial statement नहीं हुआ. Cash flow statement would have been yes. Which of the following users of has least need of published financial statements? Least. Oh, someone answered here. Answer बोलो. You support Faisal Khan? Faisal Khan answered D. यासीन अली says A. अब बोलो कौन जीतेगा, यासीन या फैसल? फैसल और एक सर आ गया ऑप्शन आंसर. डी. नखी डी बोल रहा है. So here you go. You guys have only the last one wrong. और वो लास्ट वन ही जो है उतना टाइम लगाया आप लोग. Let's review all. So the first one was pretty simple. Second one was again the odd one out because here it says only. याद रख लो, कभी भी ऐसा कीवर्ड आया तो वो आंसर नहीं रहता हो, मतलब that is the odd one out. Then here is going to be Naima's bank manager, auditors नहीं, क्योंकि ये एक sole trader business है. अगर कंपनी रहती तो ऑडिटर रहता. ये सोल ट्रेडर है, सिंगल पर्सन.
तो बैंक मैनेजर ही बेस्ट रहता है इसमें, क्योंकि कस्टमर शेयर होल्डर्स तो रहते, कस्टमर्स को क्यों दिखाएंगे, शेयर होल्डर्स रहते इसमें। फिर कैश फ्लो फोरकास्ट सिट्स इन बेस्ट। यहां पे देखो ना, दोनों भी रॉन्ग थे, डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट आर लीस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन, क्योंकि दे ओनली मेक इट। कौन सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगा, वो डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में ही रहेंगे, क्यों, वो लोग खुद ही बनाते ना भाई। वो लोग पूछे हु नीड्स अ पब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दे नो डोंट नीड, दे हैव इंटरनल इटसेल्फ। हाँ ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ऐसा टाइम लिमिट जब लगाते तो थोड़ा जल्दी जल्दी सोचने पे आ जाते मजबूर। आप लोगों के पास मेन एग्जाम में टाइम रहेगा, लेकिन मेरे पास आई विल ट्राई टू पुश इट, क्योंकि हम लोग ग्रुप में आंसर कर रहे हैं ना। तो पूरों का आंसर रॉन्ग है उसमें। 19 क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, घर को जाते ही करेंगे आप लोग। आप दोनों के पास तो एक्सेस है, आप दोनों के पास एक्सेस नहीं है इसका। Okay, so what we'll do right now is I'm going to end this session for now. Tomorrow we are having the session at the same time. Day after tomorrow we are not having a session. उसके बाद भी we are not having a session. Wednesday and Thursday, this Wednesday and Thursday we are not having a session. Friday we are having. Friday we are having a session. Friday के दिन क्या है? हाँ मनाएंगे अपन, खीर पूरियां लेके आ सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप भी जा रहे हैं देखने? नहीं मैं ले लेके आता हूँ तुम्हारे को, बेफिक्र रहो, मेट्रो खुली रहती। Anyhow, I've already updated. Wednesday and Thursday we don't have a session, so make sure that you guys are there tomorrow. And I'll be giving you work for Wednesday and Thursday. It will be online only. If there's any doubt, question, reach out to me directly.